आपण को ओडिशा स्टूडेंट्स हब यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम 2017 ओटीटी रे आसीथिबा पेपर 2 रो चाइल्ड डेवलपमेंट आउ पेडागोजी रो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिबा, जोटा कि आउ आसीथिबा ओटीटी एग्जाम जेटी एग्जाम पय मध्ये बहुत हेल्पफुल हेबो। तेबे चलंतु क्वेश्चन आडकु जिबा। क्वेश्चन कोन थिला प्रथम देखिबा चाइल्ड डेवलपमेंट आउ पेडागोजी रो। प्रथम क्वेश्चन थिला Which animal was taken by Thorndike for his second experiment of trial and error theory of learning? ऑप्शन अछि डॉग, कैट, रैट, चिंपांजी। कौन हम सटीक उत्तर? यार सटीक उत्तर हम ऑप्शन सी रेड बा मूसा। तेन ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि मैच्योरेशन इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस। कौन हम मैच्योरेशन गोटे कौन? मैच्योरेशन गोटे बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल माने हमरो जो प्रकृति होता है, जोटा कि वैज्ञानिक पद्धति जोटा आम शरीर बढ़िया बाल बढ़िया जमीती गोड़ बढ़िया एवं अन्य शरीर जो वृद्धि होता है सेपरी मैच्योरेशन भी सेपरी गोटे गोटे जिनिस। तेणु मैच्योरेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच लर्निंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग? एथिमत्र को लर्निंग टा ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हबो? सटीक उत्तर ऑप्शन अछि ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग, इनसाइटफुल लर्निंग, नन ऑफ द अबव। यार सटीक उत्तर कोन हबो ना? यार सटीक उत्तर हबो ऑप्शन सी इनसाइटफुल लर्निंग। तेनु इनसाइटफुल लर्निंग गोटे ट्रांसफर लर्निंग हो बा ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच करेक्ट फ्रॉम मास्टरी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू? कोडा मास्टरी लर्निंग होची पॉइंट ऑफ व्यू रो। ऑप्शन सी इक्वल लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल द लर्नर्स, मेथड ऑफ टीचिंग इज इक्वल फॉर ऑल द लर्नर्स, रेट ऑफ लर्निंग इज इक्वल फॉर ऑल द लर्नर्स, लर्निंग टाइम इज इक्वल फॉर ऑल लर्नर। कोटा हबो मास्टरी लर्निंग का कहवा जाय? देखो यार सटीक उत्तर हबो ऑप्शन ए इक्वल लर्निंग फॉर ऑब्जेक्टिव फॉर ऑल द लर्नर। समस्त जो छात्र बा समस्त जो लर्नर्स पाई गोटे उद्देश्य रहइबो, समस्त पाई गोटे मात्र उद्देश्य रहइबो, ता हबो कोन हबो? ता मास्टरी लर्निंग कहा जिवो। देन ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि फ्रॉम व्हिच लैटिन वर्ड द टर्म पर्सनालिटी हैज बीन डेराइव्ड? जो लैटिन वर्ड पर्सनालिटी एटा को लैटिन रो को वर्ड रो आसी? ऑप्शन सी पर्सन, पर्सनल, पर्सना, पर्सनल। कौन हम राइट आंसर? यार राइट आंसर हो ऑप्शन सी पर्सना। पर्सना रो पर्सनल पर्सनालिटी वर्ड ता लैटिन वर्ड ता। तेनो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि फॉर व्हिच ग्रुप ऑफ लर्नर्स साइन लैंग्वेज मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? को ग्रुप लर्नर पाई साइन लैंग्वेज बहुत इंपोर्टेंट। ऑप्शन अछि विजुअली एम्पेयर, हियरिंग एम्पेयर, मेंटालिटी रिटार्ड, फिजिकल डिजेबल। देखंतु आमे साइन लैंग्वेज द्वारा शिखु छाओ माने जनक आमे कोन कहि थाउ ना ताहाकू आमे निजर हाथ द्वारा बा निजर जो निर्देश दे थाओ निजर अन्य हाथ द्वारा पाटी द्वारा कोन एमिति तांकू खाली साइन दे थाओ। सेटा को प्रकार अन्य विजुअल एम्पेयर जीवो ना हेरिटिंग एम्पेयर, मेंटालिटी रिटार्ड, फिजिकल डिजेबल। कोन हम राइट आंसर? यार राइट आंसर हो ऑप्शन बी हियरिंग एम्पेयर। जो व्यक्ति सुनि गोटे लोक सुनि पाउ नाही ताकू जो जे आमे किपरि ताकू निर्देश देबा हाथ रे बा इशारा कोइ आमे निर्देश देबा, तेनु एटा गोटे साइन लैंग्वेज रे जीवो। एटा साइन लैंग्वेज तेनु हियरिंग एम्पेयर ता साइन लैंग्वेज जीवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट टाइप ऑफ टीचर इज अपॉइंटेड टू टीच द डिजेबल लर्नर्स? जो डिजेबल लर्नर्स जो माने अक्षमणीय से माने जदि डिजेबल बा जो माने दिव्यांग से माने को पाई को प्रकार टीचर नियुक्ति दिया जीवो? ऑप्शन सी रिसर्च टीचर, एफिशिएंट टीचर, एक्सपेरिमेंटेड टीचर, सब्जेक्ट टीचर। से माने को प्रकार टीचर हो ना? से माने को गोटिए रिसर्च टीचर दिया जाबा समल शिक्षक नियुक्ति देबो। तेन ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर समल शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि if the mental age is less than the chronological age of an individual then to what category do you belong? देखो जने जनकर मेंटल एज बहुत कम हबो chronological एज रु तेबे सेटा को कैटेगरी जीवो? ऑप्शन सी बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, एक्सप्रेशनल इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस, सुपीरियर इंटेलिजेंस। यार सठिक उत्तर हबो ऑप्शन ए बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। बिलो एवरेज रु आउ तलको तेनु ऑप्शन ए हबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि
which characteristic does a good test have कोटा गोटे good state ऑप्शन सी usability reliability validity all of the above आथिमर कोटा भल स्टेट देखंतु एटार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी एटा सब गोटे गोटे भल टेस्ट तेनु ऑप्शन डी हो राइट आंसर एटा मध्ये होइता डेरिवेटिव होइता वैलिडिटी गोटे गोटे पॉजिटिव टेस्ट है तेनु ऑप्शन डी हो राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव नेक्स्ट क्वेश्चन को जवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि a teacher prepared a test in mathematics and administered it to a group of students. He then administered a standardized test to the same group. The coefficient of correlation of two sets of marks of options was plus 0.90. What does it indicate about the teacher meant test? Option C, the test is valid, the test is reliable, the test is objective, the test is objective based. देखंतु कोन जने शिक्षक गणित रे गोटे प्रोग्राम प्रस्तुत करी गोटे दल छात्र परीक्षा कले माने जने शिक्षक कौन करे ना गणित पर परीक्षण करी करी गोटे जने दल गोटे दल छात्र को परीक्षा कले तापर गोटे मानकी दी करी परीक्षण दी करी तापर छात्र दल को परीक्षा करे उभय सेट नंबर मध्य सहसंबंध निर्णय काकम तापर सहसंबंध निर्णय करिया सह संबंध r इक्वल टू प्लस 0.90 हेले एथिरु से पोस्ट करथवा परीक्षण संबंध कोन हम जाना गला एथिरु ऑप्शन सी द टेस्ट इज वैलिड द टेस्ट इज रिलायबल द टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड आरो राइट आंसर कोन बा राइट आंसर हो ऑप्शन ए द टेस्ट इज वैलिड गोटे वैलिड अछि बोली एथिरु हम जानि करथन ऑप्शन ए राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच स्टेटमेंट इज कोड एथि में को टेस्टटा को स्टेटमेंटटा राइट अछि ऑप्शन अछि डेवलपमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस डेवलपमेंट ऑफ एज इंडिविजुअल यूनिक डेवलपमेंट ऑफ एज इंडिविजुअल इज नॉट कंटीन्यूअस राइट आंसर कोन हबो एहारो राइट आंसर हबो ऑप्शन सी हबो डेवलपमेंट ऑफ एज इंडिविजुअल इज यूनिक माने डेवलपमेंट समस्त पाखे अन्य अन्य प्रकार होता है तेणु गोटे अलग होता है माने जन जन व्यक्ति भी रहे गोटे गोटे पर्सनाल व्यक्ति रे भिन्न भिन्न होता है यूनिक होता है सेति ऑप्शन सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि एट व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड बिकम इमेजिनेटिव माने को बयस रे चाइल्डटा बहुत काल्पनिक होता है ऑप्शन अछि इन्फेंसी प्री चाइल्डहुड एडोलसेंस लेट चाइल्डहुड एहारो राइट आंसर कोन हबो एहारो राइट आंसर हबो ऑप्शन बी प्री चाइल्डहुड इमेजिनेटिव हो बहुत भाबिबो कल्पना करिबो तेनु प्री चाइल्डहुड हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट डिड पाब्लो एक्सपेरिमेंट हिज कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी कोडा को कंडीशनिंग लर्निंग कइथिले ऑप्शन अछि लेनिनग्राड जोहान्सबर्ग केप टाउन मेक्सिको माने कोठु आसीचंती एई पाब्लो एक्सपेरिमेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी आ राइट आंसर हबो ऑप्शन ए लेनिनग्राड रो आइछि देन ऑप्शन ए राइट आंसर एट व्हाट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डज एगोसेंट्रिक थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड डेवलप देखो एगोसेंट्रिक हबो कोन केउ स्टेज रे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इगोसेंट्रिक होता है ऑप्शन सी सेंसरी मोटर प्री ऑप्शनल कंक्रीट ऑप्शनल फॉर्मल ऑप्शनल राइट आंसर जेते को एज रे गोटे इगो हिता है इगोसेंट्रिक होइथांती आरो राइट आंसर हो ऑप्शन बी प्री ऑप्शनल रे होइथांती इगोसेंट्रिक तन ऑप्शन बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द स्पिरिट ऑफ चिल्ड्रन चेंज को एज रे डेवलपमेंट को विकास रो केउ एज रे गोटे छात्र बा जणा छुआ मानकर चारकर काना है टीम स्पिरिटटा चेंज होता है ऑप्शन सी चाइल्डहुड प्री एडोलसेंस प्री अडल्टहुड राइट आंसर कोन हो राइट आंसर हो ऑप्शन बी प्री एडोलसेंस रे होता है ऑप्शन बी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि knowledge in which subject helps the teacher to identify the individual difference among the learners शिक्षार्थी मान व्यक्तिगत तारतम्य चिह्नट करबा पई केउ विषयगत ज्ञान को साहाय्य करे आमे को प्रकार नॉलेज दरकार माने गोटे व्यक्ति गोटे छात्र मान भितर भिन्न भिन्न तारतम्य तांकर कंपैरिजन माने भिन्नता देखिबा को बा चिह्नट करबा केन प्रकार नॉलेज निहाती साहाय्य करे शिक्षक को ऑप्शन सी एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल फिलोसफी और पेडागोजी कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन बी हबो एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान नहीं दरकार एथि पय नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज मीडियन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर कोटा मीडियन इज ऑप्शन 3 5 4 9 8 ऑप्शन 4 3 5 8 आरो सीधा आंसर कहूची आरो आंसर हबो
ऑप्शन सी 5 होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। Which one comes under activity based learning? इसमें से कोटा activity based learning रहता है। ऑप्शन सी डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रैक्टिस मेथड्स, नरेशन मेथड। राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन लर्नर सेंटर करिकुलम? एथि में कोटा लर्नर सेंटर पे बहुत इंपोर्टेंट। ऑप्शन सी टीचर चाइल्ड कंटेंट एनवायरनमेंट। आर राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चाइल्ड सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स बिलोंग टू व्हिच कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी ग्रुप? जो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नरटा को ग्रुप को कैटेगरी जानती? ऑप्शन सी मेंटली डिसऑर्डर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली डिसएडवांटेज, नॉन ऑफ द अबव। और राइट आंसर कौन हम? राइट आंसर हम नॉन ऑफ द। एटा के मध्ये थाए डी हम राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि according to Piaget what is the average age limit of the child during concrete operational period of cognitive development? जो according को पियाजे हिसाब रे कोटा एवरेज एज लिमिट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग कंक्रीट ऑप्शनल पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तेन कंक्रीट ऑप्शनल रो कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंटा को एज रे थाए? ऑप्शन सी 2 to 7 years, 7 to 12 years, 12 to 17 years और 18 years एंड द अबव। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 to 12 years राइट आंसर। देन ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन सी हु स्टार्टेड इट? के कहते लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एनफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर हु स्टार्टेड इट? के कहते? ऑप्शन सी गेट्स, किमले, कैवलिन, स्किनर। यार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्किनर कहते। डी है राइट आंसर स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि at the primary level while teaching alphabets emphasis is given on writing and speaking. What learning theory is based upon? Option A trial and error theory of learning, observation learning theory, conditioning theory of learning, all of the above. Right answer होगा ऑप्शन सी है राइट आंसर। जो कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग है राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज सीन अमंग बैकवर्ड लर्नर्स? बैकवर्ड लर्नर को प्रकार कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए? ऑप्शन सी एबिलिटी टू एनालाइज ऑब्जेक्टिव बेस्ड बिहेवियर, desire for vacations of behavior, inability or to express concepts. Right answer कौन होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी inability to express concepts। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि which one is correct? Growth is a mental process, development is a physical process, growth is a qualitative process, development is a psychological process। राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डेवलपमेंट इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस। राइट आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन which attitude is conservative? His personality is conservative, and which attitude is positive? His personality is also positive. Who persuaded? Option C Morton Prince, Matt Fazel, Isaac McCluskey। राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्स क्लास्की है राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि which term is used to express the totality of the learning experience that the pupil receives through manifold activities in the school? Option C curriculum, contents, lesson plan, syllabus। राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए curriculum है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि तो आज आम पेडागोजी रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जोटा कि 2017 आसीथिला। तो निहाती यह आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल होबो। तेबे आम चैनल जदी भल रही वीडियो जदी निहाती सब्सक्राइब कर नेबे आम चैनल को आउ एमती नियमित वीडियो देखा को आम चैनल सह जोड़ी रहंतु। धन्यवाद।